Now in today's lecture we will discuss Kolbe-Schmidt reactions. Kolbe-Schmidt reaction is the most important reaction for the production of salicylic acid from phenol. So किस तरह से प्रोडक्शन होता है? Let's we start to discuss. पहले हम सिंपल जो आपकी NCERT में दी गई है as it is रिएक्शन में दूंगा. उसके बाद Kolbe-Schmidt रिएक्शंस में से कौन-कौन से सैलिसिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन जो आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट में भी नहीं दी गई है वो हम डिस्कस करेंगे. तो फिनोल में से सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए फर्स्ट फिनोल इज अलाउड टू रिएक्ट विथ ए 10% aqueous solution of sodium hydroxide. Now when phenol is reacting with aqueous solution of sodium hydroxide, then reaction occur in this way, very easy way. Na plus combine OH minus combine with H. So in basic medium we get a sodium phenoxide. Sodium phenoxide will be obtained Na plus and oxygen minus. So this structure is sodium phenoxide. Now from this sodium phenoxide present in a one container, from this closed container at 4 to 7 atm pressure and 398 Kelvin temperature, we pass carbon dioxide gas from this mixture. So when we pass carbon dioxide gas from this mixture, then we get an intermediate compound. This intermediate compound is unstable and it is known as a phenoxysodium formate. This type of unstable compound will be obtained to us. So it is known as phenoxysodium formate. So this phenoxysodium formate will be obtained to us. Now whatever structure obtained, it will be rearranged, and after its rearrangement we get a sodium salt of salicylic acid. So this is sodium salt of salicylic acid is obtained, and by acidification of this mixture by using a concentrated hydrochloric acid, one can do acidification. Then very easy, chlorine combined with sodium remove in the form of sodium chloride and H combined with oxygen, and as a result we get this structure. This is known as a carboxyl group in ortho position of phenol. This is known as a salicylic acid. Now salicylic acid is common name of this structure. If we want to give IUPAC name, then we have to give a carboxyl group as a first number and hydroxyl group second. So at IUPAC name we can write 2-hydroxy benzoic acid. So name of this structure 2-hydroxy benzoic acid will be obtained to us. So very easy thing, phenol on reaction with a sodium hydroxide, it gives sodium phenoxide. From this reaction mixture, carbon dioxide gas is passed at 4 to 7 atm pressure and at 398 Kelvin temperature. We get one unstable product which is known as a phenoxysodium formate. On rearrangement reactions, here just I have to write in briefly, it is a rearrangement. Now on rearrangement reactions we get a phenoxy, or just we can write a sodium salicylate. Now on sodium salicylate on reaction with concentrated hydrochloric acid, just we get a solid compound, white color solid compound which is salicylic acid. And salicylic acid is also known as a 2-hydroxy benzoic acid. Now whatever salicylic acid obtained to us, from this we can prepare two most important products. Suppose whatever salicylic acid we have, just I have written it here. Now this salicylic acid is allowed to react with a acetyl chloride. Now we are doing acetylation of this salicylic acid. So just I am talking about derivative of salicylic acid. Salicylic acid में से बहुत सारे compound prepare किए जा सकते हैं. So now when we do acetylation, then chlorine from here and hydrogen from here remove in the form of HCl, and we get this structure. This carbon combined with oxygen.
So this structure will be obtained to us. Just I will write it here. OCO CH3 and here COOH. So it is known as orthoacetyloxybenzoic acid. Name of this compound we can give orthoacetyloxy. This much part is acetyloxy. Orthoacetyloxybenzoic acid I have written in short. So this compound is well-known compound, well-known brand. It is also known as a common name aspirin. It is used as an analgesic drug. It is one type of analgesic drug. यदि किसी को हेडेक है तो उसको रिमूव करने के लिए एस्पिरिन की टैबलेट यूज करती है. एस्पिरिन इज नथिंग बट ऑर्थोएसिटाइलॉक्सीबेंजोइक एसिड. तो ये आपको नीट की एग्जाम में या बहुत बार पूछा जा चुका है. क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंपाउंड का नाम है और किस तरह से बनाया जाता है. उसी तरह की सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड. ये सैलिसिलिक एसिड में से हम दूसरे कंपाउंड भी प्रिपेयर कर सकते हैं. सपोज आई एम टेकिंग एस्टरिफिकेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड. Salicylic acid is allowed to react with a methanol in the presence of sulfuric acid and temperature. Just we can use 60 degrees Celsius temperature, just warm heating. Reaction occurring in this way, OH from here and H from here remove in the form of H2O. And as a result of esterification, we get this type of structure. Now, in a place of OH, OCO, OCH3 will enter, so we can write structure in this way, COOCH3. So this structure is known as a methyl salicylate. Just I will write name of this compound. It is nothing but methyl salicylate. Now this methyl salicylate is most important analgesic, जिसको आप हम पेन की, सपोज हमारे मसल्स में पेन होता है, then we are using a balm in common language. So balm is nothing but methyl salicylate. So it is also one type of analgesic drug. कि हमें मसल्स में पेन है या फिर हेडेक है तो उसके लिए हम बाम आउटर साइड एप्लीकेशन के लिए ये एस्पिरिन की टेबलेट हम लेते हैं. वो भी एनाल्जेसिक ड्रग है, ये भी एनाल्जेसिक ड्रग है, but it is used to remove a muscle pain. And this is aspirin for removing headache. तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इसमें से मिथाइल सैलिसिलिक एसिड में से बनाए जा सकते हैं. और दूसरी प्रोडक्ट, सपोज इसके दो रिएक्शन आपको एग्जाम में ए और ए में से बी, बी में से सी और सी में से डी तरह के मल्टीपल एमसीक्यू में पूछे जाते हैं. तो सपोज सैलिसिलिक एसिड को हम जिंक की प्रेजेंस में हीट करते हैं. Then zinc combined with oxygen and remove in the form of zinc oxide. Now when oxygen remove in the form of zinc oxide, then remaining part is benzene ring and carboxyl group. Benzene ring and carboxyl group. So this is nothing but a benzoic acid. So benzoic acid can be obtained from salicylic acid in a one step. On reaction of salicylic acid with zinc dust, zinc combined with oxygen removed in the form of zinc oxide and we get a benzoic acid. And similarly, if we are doing reaction of salicylic acid with a soda lime, salicylic acid की reaction लेते हैं with a soda lime. You know that soda lime is a mixture of calcium oxide and sodium hydroxide. And soda lime से decarboxylation होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप salicylic acid में से remove होगा और we get this structure, and this will be nothing but our phenol. So phenol can be obtained from salicylic acid in one step, and to prepare salicylic acid many steps is required. So students, मैंने आपको आपकी NCERT के अलावा दूसरी रेफरेंस बुकों में या एग्जाम में पूछे जाने वाले जो डेरिवेटिव्स है सैलिसिलिक एसिड के वो भी बताएं. अब हम लास्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे कि चलो ये मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से प्रिपेयर होता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट बनाने के लिए आपको हेल्पफुल होगा. बाद में हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं. चलो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं
किस तरह से ये बनता है, मैकेनिज्म ऑफ दिस कॉल्ब-स्मिथ रिएक्शंस। तो फिनोल इन बेसिक मीडियम गिविंग अस सोडियम फिनोक्साइड। तो ये सोडियम फिनोक्साइड है, मैं उसको फिनोक्साइड फॉर्मेट में लिखता हूं इस तरह से। फिनोक्साइड बेसिक मीडियम में अवेलेबल होगा, जिसमें ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज है। तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा इस कार्बन को, और इसमें रेजोनेंस है, तो ये पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगी। तो हमें इस तरह का एक मिक्सचर मिलता है जिसमें कार्बन कार्बन के साथ कार्बन ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड। नाउ दिस ऑक्सीजन, कार्बन हैंगे नेगेटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन हैंगे 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को दी, सो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड ऑन ऑर्थो पोजीशन। इस तरह से पैरा पोजीशन पर भी ये जा सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर इन ऑर्थो पोजीशन। नाउ इन ए रिएक्शन मीडियम वी आर पासिंग ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर तो हम जानते हैं, कार्बन हैविंग ए डबल बॉन्ड विथ ए ऑक्सीजन। सो दिस कार्बन गिव इलेक्ट्रॉन पेयर टू दिस कार्बन, एंड एज अ रिजल्ट दिस 1 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा सेकंड पाई, 1 सिग्मा सेकंड पाई, तो एक कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कार्बन इस कार्बन से अटैच होके बॉन्ड बन जाएगा। देन वी गेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ कार्बन हैव डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन विथ ए नेगेटिव चार्ज, एंड डबल बॉन्ड विथ दिस ऑक्सीजन विथ ए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये वाला जो कार्बन है वहां पर एक हाइड्रोजन है और ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक नहीं है, सो इट इज अनस्टेबल इन नेचर। सो स्टेबिलिटी पाने के लिए ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगी इस कार्बन पर, तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, तो तभी सिग्मा और पाई बॉन्ड में से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगी ऑक्सीजन पर। तो हमें एक नई स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगी जिसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ दिस इज एज इट इज, कार्बन हैंगे डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन एंड हियर ऑक्सीजन हैंगे नेगेटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गया, H+ इज रिमूव एंड H+ इज रिमूव एंड इसके इलेक्ट्रॉन पर कार्बन के पास है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म, सो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। नाउ दिस पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑन दिस oxygen, and oxygen having a now negative charge. This oxygen having a negative charge. So now hydrogen removed from here in the form of H+. This carbon will get electron pair and given to this carbon. So carbon carbon double bond. This pi bond break, electron pair transfer on oxygen. Now in our reaction medium here H+ ion is present. So this H+ ion will shift on this oxygen, and as a result, we get this type of product. Now here OH group and here carboxylate ion. Now in our reaction medium is basic in nature, sodium is available, so we are getting here generally sodium salt of this compound. Our reaction mixture is sodium, so as a result we get a sodium salt of this compound, oxygen minus and Na plus. So as a result we have obtained a sodium salicylate. Now whatever sodium salicylate obtained to us, now last step which is already described here, whatever product obtained to us, for this we have to acidify. So by using a concentrated hydrochloric acid, H+ and Cl minus. Cl combined with sodium and remove in the form of NaCl, means sodium chloride, and as a result we get this structure here OH and here carboxyl group. Here OH and carboxyl group, and this thing is known as a salicylic acid. So salicylic acid is obtained by using this method. So once again, here we have phenoxide ion present in basic medium. Oxygen give electron pair to carbon, and carbon bond break, electron pair transfer on ortho position. Now this carbon dioxide gas when passed from this reaction mixture, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को मिलेगी और एक कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और एज अ रिजल्ट हियर कार्बोक्सिलेट आयन, इस कार्बन के पास ये हाइड्रोजन है और कार्बन ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है।
अब ये कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर ऑन ऑक्सीजन. Our reaction medium is basic, so sodium will combine at here, so here sodium salt is there, और जो H plus यहाँ से liberate हुआ, it will attach with a oxygen, so we get a sodium salt of salicylic acid. It is known as a sodium salicylate. Now acidifying by using concentrated hydrochloric acid, we get a salicylic acid. So dear students, आज की लेक्चर में हमने पढ़ा किस तरह से कॉल्बे-स्मिथ रिएक्शन में से सैलिसिलिक एसिड बनाया जा सकता है. आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से भी ज्यादा मैंने डिटेल में दिया. रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन मैकेनिज्म हमने पढ़े और साथ में ही हमने देखा कि कौन कौन से डेरिवेटिव्स हैं जो इसमें से बनाए जा सकते हैं. दिस ऑल थिंग वी हैव डिस्कस. ये लेक्चर बच्चों आपको अच्छा लगा तो ये अपने फ्रेंड्स को भी पास ऑन कीजिएगा और उनको भी हेल्पफुल होइए. ऑल द बेस्ट. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर.